So students, today we are going to start a new lesson, that is the way the world looks. Okay, so this lesson, you can relate this lesson with the lesson which we have learned in class 3, that is where to look from. If you recall that lesson, it is very easy for you to study this chapter. First thing which we are going to learn from this chapter is to imagine how the things look like from different views. Okay? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है अगर हम उसको अलग अलग तरह से देखें. ठीक है, if we look at a bottle from side it looks different, but if we look at from the top it looks different. Identifies different view of an object. Okay, if different views are given to you, some side view of the picture, some top view of the picture, if you are easily, this lesson helps you to easily identify the object. Read school maps, city map and other maps. In this lesson you are able to understand how to read maps. Draw simple maps and shapes. Also you are going to learn how to draw maps, simple maps. Applies the concept of maps and shapes in real life. In real life also you can read and understand a map. So let's start this lesson. Gappu's air journey. Now who is Gappu? Gappu is this small mouse. Okay. Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. Gas balloon आपने देखा होगा in the fair, शायद आपने खरीदे भी होंगे gas balloon. Gas balloon is different from normal balloon. If we blow the balloon, वो क्या होता है? It doesn't rise up high, है ना? But gas balloon क्या होते हैं? वो हवा में ऊपर ऊपर उड़ते जाते हैं गैस की वजह से. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled because for the first time he was seeing a balloon, so he was very thrilled, very excited. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from the above. See, this is Gappu and he is able to see the fan from the above. ऊपर से देख रहा है fan को. And what he is thinking? Oh, there is so much dirt on these blades. From below they look so clean. ये जो fan के इसको blades बोलते हैं बेटा. So because Gappu is looking at the fan from the top, he is able to see the dirt. Now this is an activity in your book. Draw how the fan looks from below. So what you have to do, you have to look the fan from below and draw it, how it looks, because it looks different from below. Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it, and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. So Gappu is on the top and is able to see the room. The room looks like this. ये जो picture आपको दी हुई है, the room is looking like this. ठीक है? So bed is looking very different, rectangle shape. Then table is looking like this. Okay. That stupid Chinky is looking for cheese. Chinky, now who is Chinky? Chinky is another mouse. He is looking for cheese, but she can't find it. Can't even see. It is on the top of the jug. Gappu is looking from the top, so Gappu is able to see the cheese. ऊपर से देख रहा था, उसको सब दिख रहा है वहाँ से चीज़ कहाँ रखा है. ठीक है, but Chinky, because Chinky is looking from below, she can't able to see the cheese.
Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? The reason I told you, because Gappu is looking from the top, he is able to see the cheese, but Chinky is below, ना? तो वो छोटी सी चिंकी को इतने बड़े जग के ऊपर रखा हुआ चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा था. Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. Now Gappu is, because Gappu is holding the balloon, they are out in the sky and the balloon is rising up and up. The balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. Okay, so he is looking from the top and seeing so many things here. What he is thinking now? When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks so small. How's that? He is very surprised कि वो तो सोचता था कि उसका हाउस बहुत बिग है, लेकिन अब जबकि वो ऊपर से देख रहा है तो उसका हाउस उसे बहुत छोटा सा दिख रहा है. Have you experienced such things? कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि ऊपर से देख रहे हैं, आप किसी ऊंची जगह पे हैं और आप ऊपर से जब देखते हो तो चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, व्हीकल्स बहुत छोटे दिख रहे हैं या घर बहुत छोटे दिख रहे हैं. किसी माउंटेन टॉप पे हो आप कभी, या कभी एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी. As he went higher, he could see things around his house. The park, this is the park. The Gurdwara, this is Gurdwara. The railway line, this is railway line. A sweet shop, this is sweet shop. And Suhasini's house with big water tank on its roof. This is Suhasini's house and this is Gappu's house. Suhasini's house has big water tank. Now, what Gappu is thinking? Who is that on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha ha. From here, it looks like a big white mouse. Because Gappu is seeing from the top, तो उसको कैट भी कैसी लग रही है, एक माउस जैसी लग रही है. This must be the Gurdwara where Amarjit goes every day. Now he is looking at the Gurdwara. Now there are 1, 2 and 3 pictures are given of the same things. 3 balls are here and these balls are same, but you can see here they are looking different, क्योंकि सबको हमने अलग अलग व्यू से देखा है. ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज ऑल्सो द टॉप व्यू, बट हियर द बोल्स आर अपसाइड डाउन, या उल्टे रखे हुए हैं बोल्स, इसलिए और ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं. देन इन दिस थर्ड पिक्चर वी आर सीइंग द बोल्स फ्रॉम साइड, सो दिस इज द साइड व्यू. सो साइड व्यू भी डिफरेंट दिख रहा है. Draw lines to match the side view and the top view of a pipe, a funnel. This is pipe and this is funnel. So आप easily match कर सकते हो किसका top view कौन सा है, कौन सा side view है. This is top view of funnel, this is side view of funnel, this is top view of a pipe and this is side view of the pipe. It's easy to match. Then next question. Try to draw pictures of a shoe from the side, top, front, etc. So, आपको क्या करना है, अपने शू को ऑब्जर्व करना है. फ्रॉम साइड हाउ इट लुक्स, यू हैव टू ड्रॉ दैट. फ्रॉम टॉप, फ्रॉम फ्रंट हाउ इट लुक्स, एंड यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज 3 views. Now look here. What is this? This is a pencil. But because we are looking it from the top, it looks very different, isn't it? This is the side view of a car and this is top view of the car. Things are same but views are different. साइड व्यू से देखते हैं हम तो कुछ और दिखाई दे रही है, किसी और तरह से दिख रही है कार, और उसी सेम कार को अगर हम टॉप से देखते हैं तो वो डिफरेंट दिखाई देती है. Now see, here are the stairs. फ्रॉम द बॉटम, अगर आप नीचे खड़े हो, बॉटम मीन्स नीचे खड़े हो, तो आपको अपनी स्टेयर्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है. बट इफ़ यू लुक एट द स्टेयर्स फ्रॉम द साइड, तो स्टेयर्स आपको इस तरह से दिखाई देती है.
This is the top view of a table and side view of the table. Okay. From the top you can't see legs of the table. आप अगर टॉप से देखोगे तो टेबल की जो लेग्स होती हैं, जो इस तरह से लेग्स होती हैं, वो आप उसको नहीं देख सकते. Now this is the side view of the glass. If I tell you to draw top view of the glass, then it should be like this. This is the top view of the glass. This is the pan from the top. Pan on which your mothers cook chapatis. पैन होता है ना, तवा जिसको आप हिंदी में बोलते हो. अगर आप उसे ऊपर से देखोगे, it looks like this. Then this is the side view of the chair, and this is the top view of the railway track. Now let's come to the next question. The park behind Gappu's house. Do you remember the park behind Gappu's house? Here is a big picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. So you can see here there are 4 gates, A, B, C, D. 4 gates to the park. Now let's see what is the first question. Mark the gate nearest to the sweet shop. This is the sweet shop. And which gate is nearest to it? A, D, B or C? So A gate is nearer. So we write here A. Next question, which gate is nearest to Gappu's house? This is Gappu's house. So which gate is nearest to Gappu's house? Is it C, B, A or D? You can easily identify. The gate number C is nearest to Gappu's house. Next question. If you enter from gate B, this is gate B, the green bench will be to your left, right or front. If you imagine yourself that you are entering from this gate, this is your right and this is your left. So green bench is on which side, left or right? The green bench is on left side, so we tick left side. Next question. When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. अगर सुहासनी पार्क में एंटर करेगी तो राइट साइड में उसकी फ्लावर बेड होगा. दिस इज फ्लावर बेड. ओके, सो फ्लावर बेड यहाँ है. अगर सुहासनी सपोज यहाँ से एंटर करती है तो हमको चेक करना है क्या फ्लावर बेड उसके राइट साइड में होगा. यस, flower bed is on her right side. So we write here she will enter from gate D. We write here D. Next question. Which of these is nearest to you? If you enter from gate C, अगर आप gate C से enter करते हो, where is gate C? Yes, this is gate C. So which is nearest? The basketball court, flower bed, green bench or seesaw? So seesaw is the nearest one, so we tick seesaw. Now look here, this is, what is this? This is your classroom. If you look from the top, your classroom will look like this. Isn't it very different? बहुत डिफरेंट है. जैसे आप देखते हो बैठ के क्लासरूम में, वो तो बहुत डिफरेंट होता है. और यहाँ पे जो क्लासरूम आपको टॉप व्यू दिखाया है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, है ना. अब आप अपने आप को ही देख लो, आपके सिर्फ हेड्स दिख रहे हैं, है ना, नॉट फुल बॉडी. बेंचेस हैं तो लेग्स नहीं दिख रहे बेंचेस के. टेबल एंड चेयर्स आर लुकिंग डिफरेंट. ब्लैक बोर्ड, विंडोज. यस, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर लेसन. Ismail's home. On the phone, Ismail told Srijata the route to his house. From her house, the route map is shown here. This is the route map. Route map means रास्ता बताने के लिए, ठीक है. Ismail told Srijata, from your house, अपने हाउस से निकलोगी Srijata,
रीच द मिल्क बूथ, ये मिल्क बूथ है, यहाँ पहुँच गई श्रीजिता. देन टेक अ लेफ्ट टर्न. सो दिस इज लेफ्ट ऑफ श्रीजिता. अगर श्रीजिता यहाँ खड़ी होगी, इस तरफ उसका फेस होगा, तो दिस साइड इज हर लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट साइड उसको मूव करना है. फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग, दिस इज द फर्स्ट क्रॉसिंग एंड दिस इज द सेकेंड क्रॉसिंग. जब वो यहाँ पहुँचेगी, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न. सेकेंड क्रॉसिंग से कहाँ जाना है, उसको राइट टर्न लेना है. एंड गो ओवर द ब्रिज. ब्रिज आ गया. गो स्ट्रेट एंड देन टुक द फर्स्ट राइट. ये फर्स्ट राइट है, ठीक है. अगर वो राइट साइड लेगी तो वो तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी. ये तो गलत बता दिया इस्माइल ने. इस्माइल का घर तो इस डायरेक्शन में है ना. आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ पार्क. When you cross the park, you will come to a side lane. My house is in the first house in the lane. Lane means गली. ये जो गली है, फर्स्ट गली, फर्स्ट लेन जो है, उसमें पहला ही हाउस इस्माइल का है. Now, question is, did Ismail go wrong somewhere? Can you correct him? क्या इस्माइल ने कहीं डायरेक्शन गलत दी थी? Yes. उसने क्या कहा था, ब्रिज के बाद आफ्टर ब्रिज जो फर्स्ट टर्न आता है उससे राइट ले लेना, जो कि रॉन्ग है. लेफ्ट टर्न लेना चाहिए था. शो वेयर श्रीजिता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर. अगर श्रीजिता उसका रूट फॉलो करती तो क्या होता, वो राइट टर्न यहाँ से ले लेती और श्रीजिता कहीं और ही पहुँच जाती, इस्माइल के घर नहीं पहुँचती. Write the directions for going from Ismail's house to Srijita's house. Okay. From Ismail's house to Srijita's house आपको डायरेक्शन लिखनी है कि अगर इस्माइल अपने घर से श्रीजिता के घर जाना चाहता है तो कैसे डायरेक्शन देगा, कैसे बताएगा. तो if Ismail start from here, so we can say from Ismail's house टेक लेफ्ट टर्न एंड रीच अ पार्क. लेफ्ट टर्न लेगा तो पार्क आ जाएगा, ठीक है. फ्रॉम द फर्स्ट टर्न टेक लेफ्ट टर्न. अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस्माइल को लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा. क्रॉस द ब्रिज एंड देन टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न. अगेन लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा. देन गो स्ट्रेट एंड देन टेक सेकेंड टर्न. यहाँ से क्या होगा, उसको सेकेंड टर्न लेना है टू राइट साइड. राइट साइड पे टर्न लेना है तो श्रीजिता के घर पहुँच जाएगा, ठीक है. तो जिस तरह से इस्माइल ने अपने घर का रास्ता बताया है, वैसे ही आपको लिखना है कि अगर इस्माइल के घर से श्रीजिता के घर जाना है तो कैसे डायरेक्शन दोगे आप, कैसे समझाओगे, ठीक है. आप इसी की हेल्प लो, जिस तरह से यहाँ समझाया हुआ है और जो भी मैंने आपको बताया उसकी हेल्प लेके आप इजीली डायरेक्शंस लिख सकते हो. आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू. ओके, सो वी एंड दिस लेसन हियर.